আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তত চৰকাৰ কাৰ গঠন হ'ব? কংগ্ৰেছে দাবী কৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব। ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ দৰে নেতাই দাবী কৰে যে ৰাহুল গান্ধী দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে দাবী কৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাবী কৰে যে NDA এবাৰ 400ৰ অধিক আসন লাভ কৰিব আৰু বিজেপিয়ে অকলেই 370ৰ অধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। पूरा देश कह रहा है अब की बार, पूरा देश कह रहा है अब की बार প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মবিশ্বাস, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃঢ়তা দেখিলে আপুনি হতবাক হৈ পৰিব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক নেতাই বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰে। নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'ব বুলি জনা নেতাজনেও আগন্তুক নিৰ্বাচনত মই বিজয়ী হ'ম বুলি দাবী কৰে। প্ৰতিটো শাসনাধিষ্ঠ দলে, প্ৰতিটো বিৰোধী দলে দাবী কৰে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে সদনৰ মজিয়াত থিয় হৈ চিঞৰি চিঞৰি বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি যি ধৰণে তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰি ক'লে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তত NDA 400ৰ অধিক আসন লাভ কৰিব, সেই কথাত সকলো হতবাক হৈ পৰিল। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে সদনৰ মজিয়াত যি স্থিতি দেখুৱালে সেই স্থিতিয়ে কঁপাই তুলিছে বিৰোধী পক্ষ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনে ৰূপ কেতিয়াও বিৰোধীয়ে সদনৰ মজিয়াত দেখা নাছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত এনে আক্ৰমণাত্মক ভূমিকা কেতিয়াও পালন কৰা নাছিল। কিন্তু মোদীৰ আত্মবিশ্বাস দেখি সকলো হতবাক। আচলতে শেহতীয়াভাৱে দেশজুৰি হোৱা পৰিস্থিতিৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নিশ্চিত হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাটো নিশ্চিত। মূলতঃ বিৰোধী পক্ষৰ ভূমিকা তথা মতভেদৰ ফলত এইবাৰ বিজেপি নিশ্চিত হৈছে দেশত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব। আচলতে হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতিৰ লগতে উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ উপৰি শেহতীয়াভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশত বিজেপিৰ সপক্ষে ঢৌ আহিছে বুলি ধাৰণা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব তাৰো ভৱিষ্যতবাণী দাঙি ধৰিলে। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज NDA को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और NDA को 400 पार। মোদীয়ে যেতিয়া সদনৰ মজিয়াত যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখি আছিল সেই সময়ত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাবে মোদীয়ে কি কৰিছিল বুলি বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। এনে অৱস্থাত উত্তেজিত হৈ পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলিভাৱে সমালোচনা কৰে বিৰোধী পক্ষক। और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति ने कहा है। अच्छा होता हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के न हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के न हो
हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? ये क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। সদনৰ মজিয়াত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক সমালোচনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কাৰ্যত ভাঙিল বুলি মন্তব্য মোদীৰ। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়াও ভঙা নাই, আলোচনা এতিয়াও চলি আছে। ঝাৰখণ্ডত দাবী কৰিলে ৰাহুল গান্ধী। That's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. মোদীৰ বক্তব্যত শতভাগ বিৰোধী। এনডিএ 400ৰো অধিক পাব বুলি মোদীয়ে কেনেকৈ জানিলে? एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এনে বক্তব্য শোভা নাপায়। अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। 14 में आप किस वादे पे आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। आज कितना हो जाए? 20 करोड़। अब 20 करोड़ में आपने 20 लाख दिया है क्या? मैं तो 20 करोड़ की बात नहीं करूंगा। 20 लाख दिया है क्या? नहीं। কিন্তু বিৰোধী পক্ষই এতিয়াও আশা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হ'ব। 3খন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে যদি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভাল ফল নহ'ব বুলি এতিয়াও আশা প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী পক্ষই। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में आक्रोश है, जिस तरह से जो सत्ता में नहीं है, मतलब केंद्र सरकार के अलावा जहां जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में है, वहां जिस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, सरकार को जिस तरह से तोड़ फोड़ करके अपने पाले में करने की कोशिशें हैं, उससे पूरे देश में बहुत नाराजगी है। अभी आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से जो खेल हुआ, उसके बाद क्या आक्रोश है लोगों के बीच, खासतौर पर जैसे आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और तमाम चीजें जो हुई, उससे लोगों के मन में बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा और वहां बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो आप जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते हैं और इसमें आपको मतलब जनता का मन घड़ी घड़ी बदलता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जनादेश मिला तो झारखंड में भी मिलेगा। तो चीजें हमेशा पॉलिटिक्स में बदलती रहती हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আত্মবিশ্বাসে বিজেপি কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰি তুলিছে। দুগুণ উৎসাহৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনডি নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।